चैनल लिव विद सुदीप्ता। तो मेरे पीछे वाला बैकग्राउंड देख के आपको क्या लग रहा है कि आई एम इन यूरोप? एक्चुअली नो, आई एम इन दुबई, रिवरलैंड। अभी थोड़ा सा रिवाइंड करके पीछे चलते हैं। इट्स अ सनी डे। अभी हम लोग किबॉन बोतुता बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से हमें डायरेक्ट बस मिल जाएगा फॉर रिवरलैंड। हम अभी आ चुके हैं एंड दिस इज़ द आउटसाइड व्यू एंड दिस वन इज़ द VIP पार्किंग एरिया। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेस इज़ यहाँ पे कुछ भी एंट्री फीस नहीं है, सो इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ का टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ, इट्स 10 AM to 11 PM। This place is a combination of 4 different zones: India Gate, the Peninsula, the French Village and the Boardwalk. सबसे पहले मैं जा रही हूँ इंडिया गेट की तरफ। इट्स मोर लाइक अ कलरफुल स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया। थीम इंडिया है और उसके अंदर बॉलीवुड का कुछ नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। सो दिस इज़ द बॉलीवुड पार्क इन दुबई। बॉलीवुड पार्क के अंदर विजिट करने के लिए अलग से एंट्री फीस लगता है, तो अगर आपको अंदर जाके देखना है, यू नीड टू पे दैट एक्स्ट्रा अमाउंट। Just look at the architecture. Proper European architecture है and it's so beautiful. And this is the Peninsula, the 19th century architectural plaza surrounded by the river. और अभी हम आ चुके हैं लेगोलैंड के सामने। इट्स बेसिकली अ वाटर पार्क, जहाँ पे आपको बहुत सारे वाटर राइड्स एंड वाटर एक्टिविटी मिल जाएगा, तो इसके लिए अलग से एंट्री फीस है।
वाटर एक्टिविटी तो हमें करनी नहीं है, तो यहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर फ्रेंच विलेज की तरफ चलते हैं। यहाँ आने के बाद लग ही नहीं रहा है कि आई एम इन दुबई। ऐसा लग रहा है कि मैं यूरोप में हूँ। जस्ट लुक एट दोज बिल्डिंग्स। यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे डायरेक्शंस लगाया हुआ है। आप अगर दुबई में हो लेकिन आपको यूरोप का वाइब्स चाहिए, दैट टू इन फ्री ऑफ कॉस्ट, या दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। आप देख सकते हो वाटर ब्रिज में कैसे लॉक लगाया हुआ है। आप देख सकते हो देयर आर मल्टीपल डाइनिंग ऑप्शंस आर अवेलेबल हर जगह पे।
एंड दिस इज़ द बोर्डवॉक एरिया जहाँ पे आपको 1950s वाला अमेरिका का पूरा अर्बन स्ट्रीट का वाइब्स मिलेगा विथ लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड एंटरटेनमेंट. And this is another theme park, Motion Gate, with a separate entry fees. Before leaving this place, I can definitely say Riverland Dubai is the perfect place for families and friends to come together, meet, relax, and recharge. After experiencing this beautiful French village walk tour, nostalgic urban American era, European architecture, and stroll around the river, it's the time for us to go back to Pavilion. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe my channel. We'll see you in the next vlog. Until then, goodbye.